Hi, good afternoon, everybody. My name is Anup Bharat. Today afternoon, all of us have gathered here to for the approach lecture for political science and international relations, optional for UPSC. Now, before beginning the discussion, let me take this opportunity to introduce myself. My name is Anup Bharat. I am a economics mathematics graduate. I have completed my post graduation in finance, and I am a research scholar with Mumbai University right now. My research topic is related to manufacturing. I've been teaching political science for quite a few batches. I came to teach political science at Synergy because I am a very good friend with Sujit sir, who takes geography. We appeared for civil services mains together, and Atul sir is senior to me. So that's about me. My optionals were public administration and psychology. The reason I came to teach about political science is a matter of pure interest and inclination. I believe Atul sir has spoken at length about how should you go about choosing your option. This is a quite crucial decision, a make or break decision regarding your UPSC preparation, because I won't go on and on about it, as Atul sir has already mentioned quite categorically and clearly that, along with some cases that he mentioned, that some people stuck to a certain option and they were not able to score, and then they changed and their score improved. And there are various stories, both of failure and success. But what we need to focus on is primarily what we are going to look at in the next 1.5 or 90 minute session. Okay, because the way you've been studying for a degree examination, the orientation has to be completely different when it comes to the civil services examination, and particularly the mains. Until now, if you're an engineer, you've been studying for 2 or 3 days for a subject and clearing that paper. If you are a normal graduate, if you have a semester system, एग्जाम टू एग्जाम पढ़ाई होता है, कोई ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता नहीं है. बुक्स क्या होते हैं, वेरी रेयरली स्टूडेंट्स रेफर टू इट. मोस्ट ऑफ यू रेफर टू नोट्स और previous year's questions. And when it comes to UPSC, the orientation is a bit similar. That it is this examination where you truly need to be exam oriented. It might be a case that I've been, whatever description I gave about university pattern of examination and the way students approach those examinations, I was talking about the average student. It might so happen that you are a scholar and you are genuinely interested in the subjects that you have done your graduation or post graduation in, which is good. Which also says a lot about what kind of learning mechanisms you have in place. Because if you look at the syllabus of civil services examination, it is almost stuck into 4 post graduations. Mind you, the syllabus that we have for majority of options is of 3+2 pattern, that is the graduation and post graduation दोनों का मिला के syllabus है. Okay, and
what the orientation that we need to take right in the beginning, that we need to understand that we are not here to become scholars. We are here definitely for one thing, that is to have conceptual understanding. I'm talking about conceptual understanding pertaining to my option. I won't be talking about any other option. Neither I won't be able to going. I'll be going into comparisons regarding which generally people go into. That is, ये traditional है, ये dynamic है, ये non-dynamic है. I think such kind of categorizations do not serve any purpose. Whether it is traditional or dynamic, you are going to study it. Okay, dynamic है तो इस साल का जो है वो पढ़ना है. अगर नहीं भी होगा तो traditional आपको पढ़ना पड़ेगा. So there is no need in going on that discussion. Second discussion is that regarding length of syllabus. Length of syllabus totally entirely depends upon what is the weightage that a particular topic carries. Now, when we'll be discussing in detail in today's session various topics, we are going to understand that what weightage carries or kahan focus karna hai. Okay? So today's discussion, let's have I'll give you a brief idea about how we are going to go about this. Number one thing that we are going to look at is we are going to discuss a bit about optional का decision. कि एक general discussion कि अगर हम option choose कर रहे हैं तो हमें कैसे choose करना चाहिए, कसा choose केला पाहिजे एखादा optional. त्याबद्दल एक session झालेलं आहे. Maybe काही repetition असेल, पण it is necessary because we are discussing, we are in the approach lecture. Okay, had this been a normal session where we begin the syllabus, we won't. This discussion is deemed unnecessary. Okay. So second thing that we are going to look at after looking at what decides or what points you should consider before finalizing an optional. Second discussion that we are going to have is when it comes to political science and international relations, what is it that is required? आपके पास क्या होना चाहिए? तो एक नॉर्मल ऑप्शनल के लिए क्या करना है? पॉलिटिकल साइंस अगर ले रहे हो तो आपको क्या 4-5 चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए. I think the outcome, let us first define the outcome of this approach lecture. The outcome of this approach lecture is going to be, number one, for you to understand again in detail the decision regarding options. Secondly, when it comes to political science, do you have it in you to take this subject? Okay. The third thing that we are going to do is that we are going to have broad discussion to understand the scheme of the syllabus. Most of the papers or all the papers in the optionals for CSE mains are divided into paper 1 and paper 2. Both of them have equal marks, but we need to understand where does the weightage of the syllabus lies. कौन सा part अगर आपने कर लिया तो rest of it is just repetitive and addition of certain perspectives. Okay. Then we are going to have a detailed discussion about paper 1, paper 2, and then finally I am going to go about that how we are going to cover the syllabus. Okay. I hope I am clear on this. Shall we move ahead? I'll be asking these questions again and again so as to ensure that everybody is with me. So as we said in today's session, first we are going to look at the points which decides for an optional. कि आप जब optional decide कर रहे हो तो first and foremost या क्या वो चीजें हैं जो आपने देखनी चाहिए. The first important thing is that you should have interest. Optional is any optional subject carries 500 marks, and you need to spend at least on an average 5 months dedicatedly preparing for it, and then maybe 3.5 months after prelims till mains happens. So 8.5 months का जो time मिलता है, you'll have to spend time with that subject. So until unless you don't have interest in it, do not take it.
If you have interest, only then think of considering taking that optional. Only interest is not going to decide whether you should take that optional or not. You should look at, you may be interested in 2 or 3 things. Now, generally it is seen that students who study for civil services examination, they become interested in the topics of polity and history. नया होता है, स्कूल के टाइम में थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है हर एक को, and then you get some talking points with the rest of your fellow members, and this is a general topic that everybody studies, polity and history. क्या अच्छा लगता है? Polity अच्छा लगता है. Rarely there is anybody who doesn't like polity or history for that matter. Okay. So interest तो आता है, तो history में भी interest है, polity में भी interest है, geography पढ़ते हो तो if you are from engineering or other backgrounds, geography जहाँ पे आपको mental maps बनाना अच्छा लगता है, where you like concepts, where you like to study processes, where you like to study flows, flow charts, then you will definitely like geography. So there are many subjects where you would get interested in. Next thing that you need to check कि भाई ठीक है, ये 2-3 चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन इंक्लिनेशन किसकी तरफ है? Okay, where are you inclined to? So you'll have to do the, अब जो next steps हैं, you'll have to do for the top 3 subjects where you are interested in. First and foremost is that you need to understand the syllabus. Now, when I say understand the syllabus, I'm not talking about understanding the subject. I'm talking about understanding the syllabus in terms of the examination. Suppose if I am opting for political science and international relations, paper 1 and paper 2, what is the scheme of syllabus? How is the syllabus divided? Which topics are most important? इन टॉपिक्स पे हर साल क्वेश्चन आता है. This you will understand if you do the next step, that is when you analyze previous year's questions. Now, previous year's questions, most of the students, before going through syllabus, before analyzing questions, they will go and buy books or they will go and purchase notes. Please do not do this. There is no need for you to rush for your optional ka decision. Optional ka decision should minimum take at least 2 weeks. You should spend minimum on 2 or 3 hours every day to decide upon what optional to take. क्योंकि एक बार ले लिया, then it becomes very difficult for you to leave that option and shift somewhere else. Having said this, you should not spend too much of time learning about it कि क्या option लिया जाए. आपने एक बार 2 चॉइसेस कर ली, दोनों का देखा, ज्यादा टाइम लगता नहीं है. ज्यादा टाइम कब नहीं लगेगा? जब आप सिलेबस अंडरस्टैंड कर लोगे. अप्रोच लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगा सिलेबस में क्या है. Previous year's questions you'll have to go and download or purchase. There are quite a few publications which give previous year's questions collated. You can have new Vishal publications. ये बहुत सारे हैं. If you want, you can get in touch with me later so I can share with you. But previous year questions are previous year questions. There is no, whatever is available to you can take. If it is available to you online, you can download it. Okay. And then you take a basic book for that subject. Now, be it history, be it geography, be it political science, every subject has their basic book. And then from that basic book, you do certain chapter readings. Okay. So you read maybe 2 or 3 chapters, or you take a random chapter. Like students who are interested in taking political science, I particularly ask them to refer to class 11 NCERT political theory. I'll repeat myself. Class 11 NCERT political theory. Okay. I necessarily ask them to read the first 2 chapters and then maybe the chapter on nationalism. One of my favorite questions that I ask students, because थोड़ा हिस्ट्री पढ़ के आते हो या थोड़ा हिस्ट्री शुरू होता है तो आपको समझ में आता है, तो पॉल साइंस में भी, और आप we know about our country, right? Indian modern Indian history we know. So
It comes in order that we discuss the Surat split and the major difference between the nationalism of extremists and the moderates. जहालवाद आणि मवाळवाद, राष्ट्रवाद, त्याच्यात जहालवादिता आणि मवाळवादिता. What was the difference? This is a general question that I ask. And then maybe I ask students to write a small paragraph about what they have understood and what is the difference between the two. So it gives you certain amount of idea. And political science is a subject wherein it becomes very easy for you to decide whether you are connecting with the subject or not. Okay. जबरदस्ती का यहाँ पे प्यार नहीं होगा. Either you like the subject or you don't like the subject. Okay. It is not that the subject grows on you. The subject grows on you once you decide to take this optional. Don't think that you are going to understand the entirety of it in a short bit. However, if you are not getting bored while reading those 2 or 3 chapters, it is an indication that yes, you are interested and you have an inclination towards it. Okay. Now, for any option, majorly options which shares certain syllabus or there is overlap of topics between GS and that optional, GS also forms a base. Like if you have started reading polity or you have started reading NCERT for polity, then it is but obvious that GS forms your base for this optional. If you have started reading modern India, then the topics of Indian national movement and Indian government would make sense to you in political science. Similarly, it would make sense to you in history optional also. If you have started with GS geography, then geography optional would make sense to you. So GS forms the base for optional also. I'm just saying base. It would give you a standing point where you can stand, pay attention, focus, and then start learning. Okay. Then most important thing which I want to discuss a bit, whether you like it or not, let me be very clear about it. Answer writing is what is going to get you marks. Okay. Now, आप जितने लोगों से जाके पूछोगे सब बोलेंगे आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना मस्ट. I agree with them. Now the question, the difference of opinion or what I opine about answer writing is that you need to spend some time. Now when I say some time, I don't mean maybe 20 or 30 sessions. What I mean is that you need to complete a substantial portion of the syllabus, understand it conceptually in order to, कि देखो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमको चाहिए क्या. जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि गांधी एंड क्विट इंडिया मूवमेंट. So until unless you don't know who Gandhi was, when he came, what he did, what all movements he carried out, and what is so peculiar about Quit India movement, मतलब जब तक information नहीं होगा तुम लिखोगे क्या यार? You can take a question right away and I would say, हाँ चला आज ही answer writing शुरू करो. I think that would be a wrong way to go about it. I think one should wait for any option. In any option, you should wait for a sizable amount of syllabus to be covered, so as to the basic core of the subject is covered, your concepts regarding the subject are clear, and you have some writing material. What happens is that until now in university examination, most of the universities, they focus on descriptive and there is no word limit. If there is one, we do not know, we do not have the feedback regarding it, or those marks don't matter much to us. It is not a make or break decision कि आपको 62% आए या 75% आए. Generally government examination asks for 60% and above. Okay, if they are looking to screen out below average students, so they will focus on 60. But in UPSC that is not the case. You need to focus on answer writing because every answer is going to fetch you marks, and a differential of 4 to 5 marks is going to decide your ranking. Hence, it is very important to understand this point कि हाँ, answer writing का practice important है
क्योंकि आंसर राइटिंग ही मार्क्स ले आएगा। लेकिन आंसर राइटिंग कब करना है? स्पेशली फॉर माई subject, that is political science and international relations, when part A is complete, part A of paper 1, that is political theory, is complete, then you may start answer writing. Okay, ideally what I see is that students who have cleared, तो जनरली द पैटर्न इज दैट कि भाई अभी ऑप्शनल कर लो और 2021 के अटेम्प्ट के लिए आप अभी से ऑप्शनल प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे, तो तुरंत आंसर राइटिंग शुरू करना है कि सर एवरी वीक वी वांट आंसर राइटिंग। आई एम ऑफ द फर्म बिलीफ दैट व्हाट माय एक्सपीरियंस सजेस्ट इज दैट you need to have complete information at least regarding the core of the subject before you start answer writing. I hope I am clear on this point. Am I clear? सबको समझा? Okay. Okay. So the next thing that I want to discuss is what is required in political science and international relations. We'll go back to the PowerPoint. Yes. So answer writing, as I said, in due time, that is the final output. That should be the final output. Class, notes, no notes, books, no books, guidance, no guidance, test series, no test series. The final outcome of anything and everything that you do is answer writing, especially when it comes to optional. Okay. And one more thing I want to tell you कि क्या होता है जब 150 या 200 शब्दों में आपको वो चीजें लिखनी होती हैं जिसके बारे में आपने कम से कम 20-25 पन्ने पढ़े हैं। तो ये तभी हो पाता है अगर आपको वो समझ में आया है, if you have understood. Please mind you, any optional, especially my optional, that is political science and international relation, memory का कोई काम नहीं है, remembering का कोई function नहीं है. There is not much emphasis on remembering as much the emphasis is on understanding and thinking. अगर समझ में नहीं आया है तो तुम कभी आंसर ढंग से लिख ही नहीं पाओगे। आंसर लिख के तो आओगे, मतलब you will fill in the space, but you won't be able to express or give the answer in entirety until unless you have spent considerable time understanding. So focus should be on understanding, because if you don't understand, you won't be able to think. If you won't be able to think, you won't be able to analyze. If you won't be able to analyze, you won't be able to structure your response in a particular sentence. And if you are not able to structure your response or thinking or your thought in a particular sentence, how are you going to write paragraphs? And how are you going to write answer to the point? Okay. Now we can go on and on about writing styles. I think it is a very subjective matter. I think everybody develops their own style of writing. We have a certain style of writing. If you are an engineer, you are fact-based. You will state matter of the fact. If you are a humanities student, you must be very good at कि उपरोक्त पंक्तियों से कवि का तात्पर्य ये है कि वो कहना चाहता है. You might have all kind of flowery language. Here you need to understand that the more time you spend in understanding, the lesser time you will require to express it. So understanding पे focus करोगे तो answer writing अपने आप आएगा. Answer writing is nothing but expression of your thoughts, penning down of your thoughts. That is it. So there are two that logically brings our our discussion to that. What about PSR? So political science and international relations is a humanities subject. Humanities subject होने के कारण there is not a lot of objectivity. It is highly subjective. Highly subjective मतलब क्या? कि nationalism एक topic ले लें तो I will teach it differently. Some other faculty will
will teach it differently, some other faculty will teach it differently. From the same faculty, if three students listen, the way they will present about nationalism, it will be very unique and different. Hence, humanities is very subjective. कि कौन बता रहा है, किस ढंग से बता रहा है, क्या एग्जाम्पल्स बता रहे हैं. पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली if you will look at, I'll just give you an example. When it comes to stand on issues by political parties, when Congress was in government, BJP was opposing GST. Now BJP has come to, when BJP came to power, it applied GST or made a law on GST. So can you see the tact of a politician is to change his stance, his ability to change his stance smoothly and to appear logical. Because he would present the context in such a way that the changed content would make sense to you. अरे नहीं नहीं, तब तो दिन था इसलिए ऐसा था, अभी रात हो गई है तो ऐसा हो गया. So it is a matter of, it is very subjective when somebody talks for something or against something. Okay. Now in humanities, what happens is that it depends upon what position you take. Okay. While understanding, and when you are trying to understand different perspective, different thinkers, you need to understand that a particular a string of thinkers may be speaking about the same idea, but they may be speaking about it differently. You might see that there would be a development of an idea as a result of certain intellectual crisis that happens in that area. की त्यावेळेस काहीतरी प्रॉब्लेम झाला, एखाद्या माणसाचा विचार आपण का शिकतोय, कशाला एवढं डोकं फोडतोय, कारण त्यावेळेसच्या परिस्थितीमध्ये जेव्हा एवढी विषम परिस्थिती होती त्यावेळेस त्या माणसाने ते विचार मांडले. And then it is carried from there to here, and everybody has interpreted that theory and they have tried to localize to their own context. Hence it becomes very subjective. Okay, in that terms, like if you talk about social issues like discrimination. If you go to United States, you will talk about affirmative action. When you come to India, you will talk about reservation policy. So it is very subjective. That there the matter is race, here the matter is caste. So it becomes very context oriented, and hence it becomes subjective. की तुम्ही काय संदर्भ लावताय, तुमचा जगाला समजण्याचा तुमची काय पद्धत आहे, तुमचा मेंटल मॅप, तुमचा सायकोलॉजिकल मॅप, की जग कसं आहे, काय चालतं काय चालत नाही, हे अतिशय सब्जेक्टिव्ह आहे. इट इज सब्जेक्ट टू द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव हैड, कि तुमको बचपन से बड़ा कैसे किया गया है, तुम्हारी संगत कैसी रही है, तुम्हारा एजुकेशन किस तरह से रहा है. ऑल दीज थिंग्स प्ले अ ह्यूज पार्ट on the way you think, the way you express yourself. So it is highly subjective. वरना एक आदमी अगर physiologically देखोगे, same brain, same heart, same kidneys, वही 4-5 चीजें हैं, but everybody is so different. Similarly in humanities, because they pertain to study of phenomena or processes that happen in society, which have a bearing to human beings, who are very subjective, where there are considerable individual differences among person to person. Similarly, when it comes to ideas, thoughts, and thinking, or theories, or perspectives, there are going to be different views about the same thing. The reason I am stressing so much about this is that if you refer to O.P. Gauba, if you refer to Sushila Ramaswamy, if you refer to any other books, introductory books, the same ideas those authors have expressed differently. If you read Sabine, I think it is it is very superlative, very scholastic, very academic. So it is highly subjective. तो उसने जो कहा है वो गलत है, हमको relevant नहीं है, या हम जो कह रहे हैं वो relevant नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. It is highly subjective. Okay. Humanities subjects are highly subjective, they are not objective. Secondly, most important point about my option is that it is a conceptual subject. Once you understand the concept,
then you are going to see that the same concept is being applied by most of the thinkers. Okay. Now let me give you an example. Conceptual subject. तो कंसेप्ट कैसा होगा कि लाइफ जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, हाउ शुड वी लिव लाइफ एंड हाउ वी लिव लाइफ. That is the difference between idealism and realism. Difference between normative and empiricism. कि कैसा होना चाहिए और कैसा है. So these are two schools of thought, idealism and realism. Now the mere fact that you are attending these sessions is to understand कि कैसा होना चाहिए. Everybody is giving their own version. नॉर्म सेट कर रहा है कि ये 3-4 चीजें तो करनी चाहिए. एंड हम किनसे लेते हैं ज्ञान? फ्रॉम टॉपर्स, पीपल हु हैव क्लियर्ड, व्हिच इज लॉजिकल. कि वन हु हैज क्लियर्ड, वी नीड टू नो कि हाउ यू हैव क्लियर्ड, व्हाट यू हैव डन. हाँ कि नहीं? सो as how it should be and how it is are two different matters. Okay, so these are two concepts. One concept is, or one perspective, or one ideology is idealism. कैसा होना चाहिए? राम राज्य, idealistic. मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र. And the philosopher king mentioned by Plato, one and the same. Society कैसी होनी चाहिए? You look at the thoughts of Manu, categorizes. Look at the thoughts of Plato, categorizes. तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आप समझ रहे हो? कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने के कारण दो थिंकर्स के बारे में हम बता पा रहे हैं कि एक जैसे हैं. रियलिज्म कैसा होता है, मनुष्य का स्वभाव कैसा है. हाउ इज अ मैन इज अनग्रेटफुल, अ मैन इज सेल्फ सर्विंग, सेल्फ फोकस्ड, सेल्फिश, डिसीविंग. बोलता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है. fearful of uncertainty. These are the assumptions about man by Niccolo Machiavelli. So when Machiavelli gives his theory or gives his advice to the prince, you can see a similarity between Machiavelli and when you look at Indian political thought, you can, what he is talking about is realism. कसं असलं पाहिजे, चांगलं असलं पाहिजे, मॉरलिस्टिक असलं पाहिजे, एथिकल असलं पाहिजे, असं नाही केलं पाहिजे, तसं नाही केलं पाहिजे. आयडियलिझम कसं असतं, माणूस, a man is like this, man is selfish, man is ungrateful, a prince should be brave, a prince should be clever. राम राज्य की कोई बात नहीं है यहाँ पे. पावर अगर चाहिए, पावर अगर कंटिन्यू रखना है तो स्टेट शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर. कौटिल्य, मखाइविली सेम चीजें बोलते हैं. ओके, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंसेप्चुअल, आपको एक बार रियलिज्म का कंसेप्ट समझ में आ गया तो रियलिज्म आइडियोलॉजी में, रियलिज्म थिंकर्स में, रियलिज्म रियलिज्म एज आइडियोलॉजी और अ थॉट जो हमको दिख के आती है वेरियस थिंकर्स में, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हो, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हो, या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी आइडियोलॉजीज हो, या इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरी हो जिसमें रियलिज्म एक बहुत बड़ी थियरी है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रियलिज्म. I hope I have made this point clear regarding it is a conceptual subject. So the next point I believe is that political science is analytical. Now, when I say analytical, what do I actually mean? Analysis is a skill you need to have. Analysis is not merely stating of facts.
You will see that when we will study ideologies, or when we will study political thought, or in particular when we will study thinkers, that one of the major thinker in political science, जिसके पहले एक दुनिया थी और जिसके बाद एक अलग दुनिया है, ऐसा एक थिंकर है कार्ल मार्क्स. Now, why Marx was so successful? Because he used the tool of analysis. He did a beautiful analysis of capitalism. He presented a superlative analysis of capitalism and its demerits. So जब एनालिसिस करते हो तो तुमको पता होना चाहिए. अब सिंपल सी बात है, कोई थिंकर है, अब मैं तुमको एनालिसिस का फ्रेमवर्क बताता हूं. कोई भी थिंकर हो तो उसके लिए हमको क्या देखना है. You might want to take out pen and paper so that you may note this. I'll give you a 10-15 seconds. When you are looking at a thinker, तो थिंकर को एनालिसिस करने को या अंडरस्टैंड करने को क्या करना पड़ेगा. तो एनालिसिस मीन्स व्हाट, what is that thinker famous for? Analysis means asking of certain questions. So if we need to understand a particular thinker, we need to have an analytical framework. Now that analytical framework I am giving to you. कि कोई भी thinker, आप कोई भी humanities का अगर सब्जेक्ट ले रहे हो, तो this would stand true for most of the subjects. Okay. Number one, what is that thinker famous for? Number two, what is his major idea? Number three, what is his unique thought? I'll repeat. What is that thinker famous for? What is his major idea? And what is his unique thought? Now, when it comes to political thinker, we need to understand that political thinkers think about what? Constitution कैसा होना चाहिए, state कैसा होना चाहिए, society कैसा होना चाहिए. I'll repeat. Constitution कैसा होना चाहिए, state यानी राज्य कैसा होना चाहिए, and third, सोसाइटी या समाज कैसा होना चाहिए. पॉलिटिकल थिंकर्स जितने भी दिए हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हो या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो यूरोप के थिंकर्स हो, जो हमारे सिलेबस में दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, मेजरली इन्होंने इन तीन चीजों के बारे में कहा है जिसके लिए हमको इंटरेस्ट है. बहुत चीजें कही हैं उन्होंने. जैसे रूसो को देखोगे तो 100 चीजें कही हैं, लेकिन रूसो हमको है नहीं. He is not in our syllabus. He is essential to understand a certain things, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है. सो थॉमस एक्विना हो गया, सेंट ऑगस्टाइन हो गया. आपको ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा है, स्टेट के बारे में क्या कहा है, और सोसाइटी के बारे में क्या. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल थिंकर, द एनालिटिकल framework is as follows. If we need to understand a particular political thinker, first and foremost thing is that we need to learn. अब कोई भी आदमी हो, अगर आप पहली बार मिल रहे हो, आज मैं और आप पहली बार मिले, जैसे ही हम मिले सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, क्या बताया कि मैंने पिछले 10-15 सालों में क्या किया है. आई स्टार्टेड विद माई ग्रेजुएशन. 12वीं तक सबकी नैया एक जैसी रहती है. हाँ, हर एक में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है. आई एम बोर्न इन 1980, so my context, that is in time, my time and space was different. Similarly, a political thinker अगर हमको समझना है तो उसका कंटेक्स्ट, उसका एरिया, उसका एरा, उसका टाइम एंड स्पेस समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. जब हम टाइम एंड स्पेस बोल रहे हैं तो हम क्या समझना चाह रहे हैं कि उस वक्त सोशल सिचुएशन क्या थी, पॉलिटिकल सीन क्या था, इकोनॉमिक सीन क्या था, और रिलीजियस सीन क्या था. These are the 4 broad things that you need to understand. If you look at post-industrial, you might even want to add technological. कि technology क्या use हो रही है. Okay. Then after context में जब हम उस political thinker का उस time में चले जाते हैं, जब उस era को समझने की कोशिश करते हैं, जब उस टाइम एंड स्पेस को समझने की कोशिश करते हैं, जब उस वक्त के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस थिंकर की मेजर आइडियाज को समझना चाहते हैं प्रॉपर कंटेक्स्ट में.
Next logical thing after understanding the context of that thinker is a list of his major ideas. कि मेजर आइडिया क्या क्या दिया इसने, 1 2 3 4 5 चीजें बोला. अब ये 5 चीजें जब ये बोल रहा है तो anybody, any theory, any thinker who is proposing his thought, he has particular assumption. He will have assumption about man. He will have assumption about how society should be. He will have assumption about how the state should be. And then he will present his constructs or theories. And one major thing that you need to remember is that कि कोई भी थिंकर है, अब जैसे मैंने बोला कि कार्ल मार्क्स है, तो कार्ल मार्क्सला असं काय घडलं त्याच्या आयुष्यात की त्याला एवढं अनालिसिस करावं लागलं कॅपिटलिझम बद्दल. What was the central problem that a thinker was trying to solve? So when I say political science requires an analytical approach, you need to understand, analytical approach matlab you just need to analyze. When you analyze, you need to ask certain questions. So when you are trying to understand theory of a particular or thoughts of a particular thinker, you would want to understand his assumptions, you would want to make a list of his ideas or theories, and then you need to focus on कि इसका central problem क्या है. जैसे आप प्लेटो देखोगे तो प्लेटो के गुरु को मार दिया था सोक्रेट्स को. Athens had lost to Sparta. करप्शन रैम्पेंट था स्टेट में. तो प्लेटो को यह व्यवस्था पसंद नहीं थी. Plato was very close to his guru Socrates. So his central problem was corruption of the rulers of that time and how to do away with it and how to come up with a philosopher king. राम राज्य मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए जिसको पद का, धन का, संपत्ति का, जड़ जोरू जमीन का कोई लोभ ना हो, जो कि स्टेट को प्रोटेक्ट कर सके दूसरे से. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ प्लेटो. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मकाईवली, निकोलो मकाईवली. इटली का ऐसा ऐसा हुआ था, उस वक्त पोप का बहुत इंटरफेरेंस था. तो जो नया प्रिंस आया था फ्रॉम द हाउस ऑफ मेडिची, उसको डेडिकेट किया उसने अपना बुक द प्रिंस. मकाईवली ने अपना बुक द प्रिंस एग्जाइल में लिखा है और डेडिकेट किया है एक ऐसे राजा को जिसका वो फेवर विन करना चाह रहा था. और सेंट्रल प्रॉब्लम क्या था? यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो कि बाद में गारिबाल्डी ने किया. So every thinker is going to have a central problem. So when I say, when you are looking at this framework, it itself tells you that you need to have this analytical approach. कोणी केलं, का केलं, कशासाठी केलं, काय गरज होती. So there is शांत बसलाय असा माणसासाठी नाही आहे पॉलिटिकल सायन्स. You can see by my mannerism itself that I get very excited even if I am talking about the same thing the 100th time, because it is answering. If you are logical, if you are analytical, you want to answer with facts, with theories, with scholars backing what you are saying, then you need to have an analytical mindset. Okay. The next thing that you want to know after a list of ideas, after understanding the aim, central problem से आपको समझ में आएगा कि उस थिंकर का एम क्या है. त्याला करायचं काय, हा एवढी सगळी थिअरी कशासाठी देतोय हा माणूस. व्हाय इज ही गिविंग सो मच ऑफ थिअरी? द रीजन is that he is trying to solve some central problem, that he has certain aim. किसी ने कुछ भी सोचा, कुछ भी बोला, पूरी दुनिया ने पढ़ा, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा, वो यूपीएससी के सिलेबस में आया और आपको वो थिंकर शायद 3 या 4 घंटे के लिए उसके साथ वक्त बिताना पड़ेगा. उसका कोई रीजन है, क्योंकि उस बंदे ने कोई एक सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में बात की. नेक्स्ट थिंग, उस थिंकर पे इन्फ्लुएंसेस कौन कौन, उस थिंकर का गुरु कौन है, उस थिंकर के का करंट सिचुएशन क्या था, ये समझना है. देन यू वुड वांट टू नो अबाउट उसने मेथड क्या अपनाया, डेटा कलेक्ट किया. हमारे जैसा रिसर्चर थोड़ी ना है वो, गया लोगों का ओपिनियन क्या है लिखा. नहीं, 4 लोगों से बात किया, किसी से मिला. हर एक की मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो सकती है. कोई इन्फ्रेंस कर सकता है, कोई एक्चुअल एनालिसिस कर सकता है, कोई लाइक इफ यू लुक एट हीगेल, जो कि स्टेट फिलोसोफर था जर्मनी का, जिसने थियरी ऑफ स्टेट दी एक्चुअली.
स्टेट सर्वोपरि है, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ये कहता है, इट कम्स आउट ऑफ रिसर्च। इज रीडिंग ऑफ द रिपब्लिक, प्लेटो हो, अरिस्टोटल हो, उसके पहले प्रीवियस जितने लोग थे उनके थॉट्स को लेके उसने बताया। सो व्हाट इज मेथोड, देन किस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता है, कि भाई लिबरल है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, फेबियन सोशलिस्ट है, वगैरह वगैरह। एंड देन क्रिटिसिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या होता है ना कि हम कोई थिंकर, जैसी पॉलिटिकल सायन्स में जितने थिंकर्स देखेंगे, हर थिंकर सगळ्यांची गोष्टी आपल्याला पटतात, मग क्रिटिसिझम येतो तेव्हा आपल्याला वाटतं अरे बरोबर आहे, इट्स अ क्रिटिसिझम. देन यू नीड टू अंडरस्टँड की व्हाई इज एनी somebody criticizing him, are there fair grounds to criticize him? Then you need to लब कि who are his major critics, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज इसको किसने किया है, उस थिंकर का मेजर क्रिटिसिज्म किस बारे में है, एंड माना उसके बहुत सारे क्रिटिक्स थे, उसके बहुत सारे क्रिटिसिजम्स थे, लेकिन वो थिंकर आज भी क्यों रेलेवेंट है, ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है. तो जो भी हमारे 16-17 थिंकर्स हैं इंडियन और वेस्टर्न मिला के, जो कि राउंड अबाउट 55-60% ऑफ वेटेज थिंकर्स को है, एक बार आपने ये एनालाइज कर लिया, वर्क डन. Shall we move to the next point? Have you understood what we mean by being analytical? Yes. So thinkers are logical, analytical, and critical. This is what we have discussed. Okay, you need to have a framework. So for these 3 points, that political science is a conceptual subject, one needs to have an analytical approach to it, because there is an approach, being an approach lecture. I think this was the most crucial point that I wanted to discuss. And since the majority portion being regarding understanding the subject is thinkers, these thinkers are extremely logical, they are analytical, and they are entirely critical. They are critical. जो भी next thinker है वो previous thinker को criticize करता है और अपनी theory present करता है, उसका एक logic present करता है, questions पूछता है, उसके answer देता है. In that terms he is analytical. Okay. Now next is that you need to have a holistic approach. अभी holistic approach बोले तो क्या सर? We generally have a habit of thinking in a particular silo, single track thinking. Holistic approach बोले तो क्या? Your most important resource. Now, mind you, I have not shared any sources for this subject yet. Okay. Apart from when we were discussing कि optional के लिए क्या करना चाहिए, तो political science के लिए class 11 NCERT, political theory, any 3 or 4 chapters, especially the chapter on nationalism. So when you're talking about nationalism, you are going to read it from political theory, class 11 NCERT. Then we are going to have a discussion on the ideology of nationalism. Then we are going to talk about nationalism in current context and how. आज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो the current government makes a huge value out of the ideal of nationalism. And you would see the opposition talking, and we think if we are carried away by nationalism as a power, then what happens is that we think opposition क्या बेवकूफ है यार, ये तो anti-national है. Anybody who talks against government today is anti-national. And you see how dangerous an idea can be. But when we are listening to news channels, especially corporate news channels, you need to be very wary when you are looking at opinions. Opinions directly import नहीं करने. होलिस्टिक अप्रोच रखना है इन द सेंस, अगर कोई बोल रहा है कुछ तो किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोल रहा है, त्याचा काही संदर्भ आहे आज नाही आहे. You need to understand this basic fact that you need GS हो, GS में security related issues हो, are going to be related to bilateral relations, are going to relate to international relations, are going to relate to globalized or multinational agencies के issues, are going to relate to India's foreign policy, is going to relate to US का foreign policy. So everything is integrated. You cannot look at something in isolation. You need to look at the entirety of the scheme of things.
कि जिस तरह से हो रहा है कि जितना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आइडियलिज्म को महत्व दिया जाता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रियलिज्म को महत्व दिया जाता है. So when you are analyzing a particular issue, say suppose you are talking about the problem of Rohingyas and the problem of secularism, it is just not the matter of religion. It is a matter of demographic. It is a matter of how they are affecting economy. It is a matter of what is their status there. It is a matter of how social media has affected communal violence there, and those people were massacred and they started running in India. And then India, we already have a problem of immigrants, and how the problem of immigration relates everywhere, especially in Western Europe, as compared to Middle East or West Asia ka public moving, Africa ka public moving to Europe. To holistic manner, when you are talking about Rohingya, it is an issue of immigration, and it is typically a, तो इमिग्रेशन में भी दो चीजें हैं, एक है illegal immigration, एक है legal immigration. And then when you're talking about this, you need to also talk about fundamentalists and liberals. तो holistic approach होना बहुत जरूरी है. So though you are answering, and what happens is that this holistic approach आपको तब आता है जब आप चीजों को silos में नहीं देख रहे हैं, box में नहीं देख रहे हैं. You have opened yourself up. Especially in order to understand. I'm not talking about when you are expressing, you need to write everything. You need to be specific. But for you to be specific, you need to understand it holistically. I hope I have made my point clear. Yes, it must be clear by now that political science is not for people who mug up and just throw it out. This is a subject which is thinking based. If you think, if you focus on understanding, then I think you are at home in political science. So what usually happens, let's go through this process, that what thinking में problem क्या आता है. सर ठीक है, आप बोल तो रहे हो की थिंकिंग है, अंडरस्टँडिंग आहे, पण सर मी करू कसं मग, आतापर्यंत कधी मी थिंक केलं नाही, मला माहित नाही मी थिंक करू शकतो की नाही, किंवा मला वाटतं मी थिंक करू शकतो पण मी ऍक्च्युअली करू शकतो की नाही माहित नाही. लेट अस अंडरस्टँड दिस process of thinking and understanding a bit through basics. It is also related to your learning mechanisms. There might be a few people who have studied in vernacular, Marathi या हिंदी में पढ़े होंगे, or there might be people who have studied in English, their medium was English, but still they think in a particular language. Language is the medium of thoughts. भाषा विचारांचं माध्यम आहे. भाषा विचारों का माध्यम है. तो हम सोच कब पाते हैं अच्छे से? When are we able to think in a particular language properly? When we know the words, when we have vocabulary. When are we going to have vocabulary? When we have exposure to it. Generally, how we operate is that we translate from one language to the another. Number one thing that is going to happen in your life is that when you will start reading Hindu, especially the editorials, you will have to do the painstaking work of trying to understand the meaning of words. Now, when you are going to start understanding the meaning of these words, it is going to register somewhere in your mind. The same word will have different meaning in different contexts. And when you will read those words in different contexts and understand that particular meaning in that particular context, that means you are thinking. कि आपने कुछ विचार किया कि ये कहना क्या चाह रहा है, समझने की कोशिश की ताकि विचार कर सके. So thinking and understanding go in hand in hand. So for thinking, this subject is for thinkers. It is not that कि तुमको 4 बुक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर 4 वेबसाइट्स पढ़ना पड़ेगा,
फिर 4 आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा? नहीं. Class notes, class discussion, and the debates that happen on Rajya Sabha TV, more than enough for you. More than enough for you to understand, to develop understanding, and to start thinking in a particular way. So सोचना और विचार करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मकाईविली पढ़ा तो देखना अपने आजू बाजू कि ये जो थिंकर बोलता है, ये जो अजम्पशन किया है ह्यूमन बींग्स के बारे में, क्या वो सच है? क्या हम सही में अनग्रेटफुल हैं? क्या हम सही में ग्रीडी हैं? आईएएस क्यों करना चाहता हूं? देश की सेवा करना चाहते हो कि मेवा खाना चाहते हो? Different motivations might be there. There are quite a few people who would debate regarding the paper of ethics. Ethical होना चाहिए, everybody agrees. Ethics होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना बोलो, चलो. Ethics होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Ethical होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? No, nobody wants to talk to me. होना चाहिए. इनमें से होना चाहिए. Who else thinks ethical होना चाहिए? Please answer. Nobody? Rest of you don't want to answer? होना चाहिए सर. होना चाहिए एथिकल. ठीक है, अगर एथिक्स होना चाहिए तो फिर लॉ क्यों है? आप समझोगे अभी जब हम बात करेंगे. बिकॉज एथिक्स फेल, बिकॉज मोरालिटी फेल्स, लॉ बनता है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट रूल ऑफ लॉ. तो रूल ऑफ लॉ एसेंशियली मीन्स द लैक ऑफ फेथ इन द एथिकल नेचर ऑफ मैन, दैट मैन कैन नॉट बी एथिकल. सोचो, है कि नहीं अपोजिंग थॉट? करप्शन सबसे ज्यादा रैम्पर्ट कहां है? ब्यूरोक्रेसी में. और पेपर कौन सा देते हैं सिलेक्शन के वक्त? एथिक्स. है कि नहीं कॉन्ट्रडिक्शन? इज देयर अ कॉन्ट्रडिक्शन? यस और नो? माय क्वेश्चन इज देयर अ कॉन्ट्रडिक्शन? यस सर. देयर इज. तो आप जब ये सोचने लगोगे, तो धीरे धीरे जब सोचोगे ना, जब समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है. So political science is also an optional which is going to open lot of doors of your minds. And जो आपको जैसे आप प्लेटो पढ़ोगे या अरिस्टोटल पढ़ोगे, प्लेटो पढ़ोगे तो वो बोलता है कि एजुकेशन इज द बेस्ट टूल ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. इस स्टेट को कैसे सिटीजन्स चाहिए, ये स्टेट मैनिपुलेट कर सकता है थ्रू एजुकेशन. इसलिए एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसी और क्या सिलेबस होना चाहिए, हमेशा स्टेट ने अपने हाथ में रखना चाहिए. देयर शुड ऑलवेज बी स्टेट कंट्रोल ओवर एजुकेशन. दिस इज व्हाट प्लेटो एंड अरिस्टोटल से, स्पेशली प्लेटो. आज भी हम देख रहे हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट था तो हिस्ट्री में जेएनयू के सर्टन हिस्टोरियंस जो लेफ्ट लीनिंग थे, वो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी. जैसे ही ये गवर्नमेंट आई, दे हैव चेंज. तो एक्चुअली हिस्ट्री क्या है भाई? इट इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन और योर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. आपको किस तरह के सिटीजन्स चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है एजुकेशन एज अ पॉलिसी एंड स्टेट का कंट्रोल ओवर इट. तो दिस इज हाउ इट इज. Thinking based, understanding based. And next is practical approach. Practical approach I want to discuss a bit, because what happens is that most of the time students, when they start or they take political science, तो होता क्या है कि students either get carried away by ideas, ideologies, thinkers, and they themselves start becoming scholars. तो प्लेटो का सारा हिस्ट्री पढ़ के आएंगे, प्लेटो ने क्यों बोला, कैसे बोला, म्हणजे एवढं भाष्य करतील एखाद्या थिंकरवर की विचारू नका. नो, mind you, we are not here to become scholars. We are here to understand the gist of the subject, so as to we'll be able to write answers. Okay,
So number one mistake that students do is that they become impractical by becoming scholars in the subject. You do not need to become. You need to have a practical orientation. Don't lose sight. How much ever interesting the discussion will be, eventually what is going to matter is the answer. The answer that you write. Okay? And you should be practical. Practical approach मतलब क्या? Practical approach आपको पूरे यूपीएससी में ही रखना है. एक चीज समझ लो, सवाल सवाल है. Any question is merely a question. It is us. We qualify it. We become impractical when we qualify it by saying, अरे यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, अरे अनूप सर पूछ रहे क्वेश्चन, अरे अतुल सर पूछ रहे क्वेश्चन. Question is a question. Whether your sibling asks you, your mother asks you, your father asks you, some kid asks you, your batchmate asks you, your peer asks you, your girlfriend, your boyfriend asks you, anybody who is unrelated, किसी को तुमने बताया मैं यूपीएससी कर रहा हूं, that person asks you. A question is a question. It is just that if it is printed on the stationery of UPSC, we think, oh, UPSC ने पूछा. No. Have practical orientation. कि सवाल तो सवाल है, वो कोई भी पूछे तो मुझे जवाब देना है. When you have this orientation, when you get out of the awe कि बाप रे यूपीएस, इसके बाहर एक बार आप निकल जाओगे ना, you will become practical. फिर वो जीएस हो या ऑप्शनल हो, कोई भी ऑप्शन लो, you have to be practical. Political science में तो specially, because it is so easy to be lost in so much of discourse, discussion and narratives that are going around. Newspaper, news, articles, फिर तुम 100 जगह से 100 चीजें पढ़ोगे, everything is going to influence you, which is impractical. You need to stick to core ideas, previous year's questions, and then once you have the basic orientation, then you start answer writing, and then gradually you improve your answer writing. तुमको सही ग्रामर आता है, इंग्लिश आता है, इसका कोई लेना देना नहीं है. थोड़ा टाइम लगता है, खुद को थोड़ा टाइम देना पड़ता है. वो टाइम को जस्टिस तभी होता है अगर आपका अप्रोच प्रैक्टिकल है. यू विल स्पेंड, सपोज कोई अभी कोरोना का टाइम चल रहा है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ चाइना बैशिंग गोइंग ऑन, and then right now the media is projecting as if India and China are going at war and there is going to be a war, and how India 5 अपने पास रफाल आ गया तो we are going to defeat China. It's very impractical. Don't get carried away by anything. Especially do not read any news apart from the news that is given by the state. राज्यसभा टीवी के अलावा कोई न्यूज देखो मत. Do not watch any news channel, do not watch any news debate unless it comes on Rajya Sabha TV. It is totally irrelevant. You do not understand. What relevance does Bollywood have? Nothing. They are everywhere. Celebrities talking everywhere, sitting at home, giving their opinion, and we get it carried away. So you need to have practical approach. आपको समझा practical approach बोले तो क्या? Everybody understood when I say practical approach? Yes sir. है ना? Carry away नहीं होना है. Scholar नहीं बनना है. दूसरी चीज, activist नहीं बनना है. लगेच वॉर्डाच्या इलेक्शनला उभा राहतो, आता बघ कसं मतं खेचतो, आता बघ कसं करप्शन करतो आणि कसं. Don't go for that. Okay, it so happens that थोड़ा ज्ञान आ जाता है. Knowledge is power. We are going to study Foucault, and he is going to tell us that knowledge is power. We are going to study Socrates, who is going to say that knowledge is virtue. You will realize in due course of time that when you will study these thinkers, तुम चाय पीने जाओगे और अरिस्टोटल सॉक्रेट्स की बात करोगे तो लोग तुमको एनी विच वे आर गोइंग टू लुक एट यू. बॉस क्या मालूम है इसको? सो डोंट गेट कैरिड अवे बाय दैट नॉर्मल पीपल हु डू नॉट नो, जो थोड़े से एफर्ट से आप जान सकते हो किसी भी चीज को, तो आपको लगने लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है. नो, ऑलवेज बी इन अ डाउट दैट वेदर यू नो इट फॉर श्योर और नॉट, whether you think Plato is correct or not. Do not side with anybody. Be practical. भाई देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्रिटिसिजम्स बताओ तो क्रिटिसिजम्स बताएंगे. एग्जाम में क्वेश्चन आया कि केस प्रेजेंट करो तो केस प्रेजेंट करेंगे.
फॉर या अगेंस्ट नहीं होंगे. आर वी क्लियर व्हेन आई से प्रैक्टिकल अप्रोच? Yes, sir. Also try and understand practical approach जब मैं कह रहा हूं, it might so seem that the syllabus में इतने सारे points हैं. सबके पास syllabus है क्या? Everybody has syllabus? Do you have syllabus with you? If not, you can check. If you check the syllabus, it gives out so many topics. But it is highly impractical to try and cover all topics same time. नहीं. Practicality क्या है कि एक्चुअल सब्जेक्ट समझने के लिए सिलेबस के किस पार्ट में फोकस करना है और ये 5 महीने में क्या डिस्कस करना है should be our focus. If you go on about India and Pakistan bilateral relations, you can go on and on. People have written thesis, they have done postdoc on that. You don't want to have that orientation. I hope I am clear. I have made my point clear regarding political science and what is required for political science. Shall we move forward? Shall we? Yes, sir. Okay. Yes. Now let's go about have a broad discussion regarding to understand the scheme of syllabus of political science and international relations. It goes without saying, everybody knows this, that there are 2 papers in this syllabus, paper 1 and paper 2. Both papers carry 250 marks each. The first paper is political theory and Indian politics, which can be broadly categorized into part A and part B. Part A consists of political theory and part B consists of three categorical topics, that is national movement, that is Indian national movement, Indian constitution, and issues relating to Indian politics. Okay. Now, what should we know when we are broadly what we should know regarding paper 1? That political theory is the entirety of the subject. एक बार पार्ट ए पॉलिटिकल थियरी हो गया तो समझ जाना कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हो गया. जो अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस का पार्ट था, जो बेसिक जो कोर है इस सब्जेक्ट का, वो पार्ट ए में ही है. पार्ट ए एक बार हो गया, उसके बाद कुछ हार्डली ही कुछ नया है, बाकी सब एड ऑन और एसेसरी है. Have I made this clear? Please say yes or no. Yes, sir. Okay. Next, that the paper 1 is purely understanding based. अगर समझ में नहीं आया तो गोंडोगोल हो गया, और अगर समझ में आ गया तो रिवीजन का भी जरूरत नहीं. एक बार मार्क्स ये जो अपन 8-9 घंटे जो मार्क्स को पढ़ने में लगाने वाले हैं क्लास में, 3 या 4 लेक्चर में, एक बार मार्क्स क्लास में समझ में आ गया ना आपको, डन. उसके बाद बार बार मार्क्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं. इफ यू हैव अंडरस्टूड, देयर इज नो स्ट्रगल इन लाइफ, स्पेशली देयर इज नो स्ट्रगल इन पॉलिटिकल साइंस. ओके. अच्छा, हाउ विल यू अंडरस्टैंड? एक्टिव लर्निंग इज रिक्वायर्ड. एक्टिव लर्निंग बोले तो क्या? आज जो हुआ है वो आज ही निपटाना है. ऑप्शनल की क्लासेस जब जिस दिन होंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सपोज 3 दिन है, कोई भी ऑप्शन आप चूज करो. खासकर पॉलिटिकल साइंस में जो उस दिन पढ़ा है, अगर वो उसी दिन अगर आपने निपटा दिया, आप नेक्स्ट डे या प्राइवेटली आप यू कैन गेट इन टच विथ मी रिगार्डिंग कि सर ये समझा दो,
डन। मंडे का टॉपिक ट्यूसडे को लेके जाने का नहीं, तब का तब अगर कर दिया। सेकेंडली, व्हेन इन क्लास I go by the maxim that I should go with the pace of an average student, कि सबको समझ में आना चाहिए। माई जॉब इज टू जस्ट, वरना पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट, सारे नोट सब ऑनलाइन अवेलेबल है। मेरी क्या जरूरत है? माई माई रिक्वायरमेंट और व्हाट आई ऑफर इज टू हेल्प यू एक्टिवली लर्न, to ensure that you have understood correctly, and to ensure that you are able to write answers. Okay, then part A or paper 1 part A is essential to further understanding. उसके बाद का जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is a part of constitutionalism. Constitutionalism is a basic idea which limits the power. Anything that limits the power of government, whether there is a written constitution or unwritten rules which limit the powers of the government, you can say constitution exists there. So Indian constitution में how the powers of the government are limited, how that किस तरह से बनाया, किसने बनाया, कहां से लिया, कौन गया था, क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, किसने क्या प्रेजेंट किया. Everything else is just a matter of fact. That is, the rest of the syllabus is almost like general studies. It is extended to bring पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बढ़ाया गया है. क्यों? बाकी के सब्जेक्ट के साथ एट पार लाने के लिए. ये चीज समझ लो. पार्ट ए अगर समझ में आ गया पॉलिटिकल थियोरी, रेस्ट ऑफ इट इज केक वॉक. ओके, लेट्स लुक एट पेपर 2. शाल भी कुछ पूछना है? आई एम गोइंग टू गो इन डिटेल. यस, पेपर 2. Now, paper 2 is comparative politics and international relations. Comparative politics and international relations. Now, this paper we will not divide in parts, we will divide in topics. There are 4 broad topics: comparative politics, theory of international relations, world political issues, and Indian world. Now, before we discuss this, I would want to make certain things clear. Now, the point that I want to discuss right now is the point of comparative politics. Now, before discussing the point on comparative politics, which we will discuss in subsequent classes, comparative से मतलब क्या है? क्यों comparative दिया है? आपको समझना ये है कि humanities is a social science. Everybody agrees? Everybody agrees political science is a social science. You say yes or no? No. Yes, sir. Political science is a social science. Social sciences are different from pure sciences. They are different in the terms of that in pure sciences you will be able to validate a particular theory by conducting experimentation. You will be able to conduct those experiments in controlled environments. Now, in social sciences, particularly society, the basic unit is family, and family is made up of man, human beings. You cannot conduct such experiments real life. There is a limitation. Hence, whatever theories are developed in social sciences, they are graded on the basis of their scientificness. Scientificness matlab how objective they are and how predictable are their results and how consistent are the results of experimentation. Experimentation तो social science में possible नहीं है, especially in political science. हाँ चलो let's experiment, ऐसा नहीं होएगा. Social science में the most scientific method of study, I'll repeat myself, social science में most scientific method of study is the comparative method. You are no new to it. बचपन से आज तक तुमको केवल कंपैरिजन से ही समझ में आया है. Yes or no?
best way to understand is to compare. Yes or no? Yes, I agree. In social sciences, comparative method is the most scientific method, and applying that most scientific method in comparative politics, we are going to look at certain perspectives. Comparative politics is a very important topic because every year there is a question on comparative politics. Okay, लोगों को ऐसा लगता है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार जेसी जोरी का बुक पढ़ना पड़ेगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या करूं? बिल्कुल घबराने का नहीं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ, उनको एक तो समझ में नहीं आता है कि कंपैरिजन किस चीज का है और क्यों कर रहे हैं। हमको तो आज सबसे पहले समझ में आ गया। अब तुम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ले लो, कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, कुछ भी ले लो कंपैरिजन। कंपैरेटिव मेथड इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ सोशल साइंसेस। उसमें सर्टेन अप्रोचेस है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच, 4-5 अप्रोचेस देखोगे, हर जगह जाओगे सोशल साइंस में, हर किसी के घर में जाओगे तो तुमको ये अप्रोचेस पड़ी हुई मिलेंगी। उसमें थिंकर्स अलग अलग हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट होगा कोई तो कंपैरेटिव को एक पर्टिकुलर मेथड लगाएगा, कंपैरिजन करेगा। अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव जो आपको जीएस में है, दैट इज कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, उस रिस्पेक्ट में कंपैरेटिव है। अब कंपैरेटिव अब होता क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंपैरेटिव में 2 मेजर अप्रोचेस हैं, एक है पॉलिटिकल इकोनॉमी और एक है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। अदल बदल के अगर तुम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर एनालाइज करोगे तो यू विल सी दैट दीज आर द 2 अप्रोचेस व्हिच आर आस्क्ड अल्टरनेटिवली। So it becomes easy for us when we do question paper analysis to understand what kind of questions have been asked. Now you will see that same question has been asked. So it is just a matter of understanding for you. Everybody gets a fair chance to answer. Everybody, अगर आपने पिछले साल पॉल साइंस का मेंस लिखा है, इस साल वापस मेंस लिख रहे हैं, you are in a you just have a slight advantage. That depends upon whether you have spent adequate time in understanding that what went wrong last time that you have to write mains this time again. I hope I have made my point clear. Okay. Let's go back to the syllabus, shall we? Comparative method सबको समझा? सर वो दोनों पॉइंट्स बताओ ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ये तो पूरी थियरी है। आप you want me to cover theory today? Because you want me to cover theory today? No sir. Maybe what I'll do is that I'll share my email ID and then you can get in touch with me later on to understand this. Okay, I'm just sharing my email ID. Yes, सबको मिला मेरा email ID? Have you got? I've just shared on chat. Yes, sir. Yes sir. Great. कुछ भी question होएगा तो we can discuss this later. Okay. And mind you, all methods, those perspectives, उनका limitation, comparative method का limitation क्या है, political economy वाले theorists कौन है, political sociology वाले theorists कौन है, समझ में आ जाएगा। Once you understand Marx ना, Marx के पहले एक दुनिया थी और बाद में एक दुनिया थी. This is what we are going to understand in political science. So we are going to spend maximum time here. Okay. And then we will pick up from there. आप समझो कि जब आप comparative पॉलिटिक्स देखोगे ना तो आपको समजेगा की अरे पार्टीमध्ये हेच होतं, परत इकडे आलेलं आहे, फक्त 2 जण अजून आलेले आहेत आणि 2 जणांचा अर्धा पॅराग्राफ परत आलेला आहे. Yes, in comparative politics we said is essentially repetition of political theory with addition of few perspectives. I have already made this point. Then next topic is theory of international relations. Now theory of international relations बहुत ही recent है, मतलब hardly 100 साल का इतिहास है, क्योंकि international relations as a subject is a very young subject and it began after World War I.
1914 to 1918 बोल्शेविक रशियन रेवोल्यूशन जब 1917 रशिया में हुआ, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी शुरू हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम वी सॉ दैट नेशन स्टेट्स फॉट विद ईच अदर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर वाज अ फाइट, देयर वाज अ ऑनगोइंग स्ट्रगल, लेटेंट स्ट्रगल, जो कि दिख नहीं रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 तक दिखा नहीं हमको, दिख रहा था लेकिन कि जर्मनी कैसे सफर किया, जर्मनी में कैसे पावर आया, इटली से कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, कैसे वो लोग साथ में आए, कैसे रशिया जर्मनी एक साथ थे फिर वो अलग हो गए। तो थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ थियरी सबसे ज्यादा थियरीज यू विल सी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, द वॉर मशीन ऑफ द वर्ल्ड, the country which thrives on wars, the country which dominates on the basis of its hegemony, उसका खुद का वर्ल्ड डोमिनेशन है। वर्ल्ड आज एक पॉलिसी बनाएगा, आज तक चाइना के साथ जा रहा था, ट्रम्प जैसे ही आया उसको समझा अमेरिका फर्स्ट है, चाइना इज नॉट इन फेवर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड पॉलिसी, चाइना से दुश्मनी ले लिया। तो you will see that entire international relations, even foreign policy, हम जब इंडियन वर्ल्ड में इंडियन फॉरेन पॉलिसी जब स्टडी करेंगे तो अपन देखेंगे इट इज जस्ट डेरिवेटिव ऑफ यूएस का फॉरेन पॉलिसी। जब यूएस जो बोलता है उसी का कुछ तो इंडिया बोलता है। There is nothing new. There is one thing which we are going to know for sure, that इंडिया को जितना बड़ा, जितना स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बताया जाता है उतना है नहीं। एंड वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 से कोल्ड वॉर सेशन होके ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस, ग्लोबल इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस से लेके आज स्ट्रेटेजिक रिलेशंस पे इंपॉर्टेंस, all this we are going to study in international relations. In that we are also going to look at certain topics, overlapping topics है world political issues में भी, जैसे यूएस का डोमिनेशन हो गया, then डेरिवेटिव ऑफ, जैसे अभी ईरान बोलेगा कि भाई इंडिया तुम हमसे दोस्ती तो करना चाहता है लेकिन तुम किसके घर से आया है, तुम जब भी यूएस से वापस आता है तब ईरान आता है। इट इज गोइंग टू क्वेश्चन कि you are allying directly with my enemy and then you are saying that you are my friend. How come you are my friend? Your entire foreign policy is dependent on what US dictates to you. Maybe dictates is a very strong word. It is a derivative. जो US पोजीशन ले रहा है वही US आप ले रहे हो। आपका एंटी चाइना स्टांस है, यूएस का एंटी चाइना स्टांस है, इसलिए आप यूएस से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हो। कहीं ना कहीं देयर इज अ कनाइवेंस एंड नेक्सस which it is presented by Indian foreign policy or Indian state that if there is an unholy alliance between China and Pakistan, China is using Pakistan as a proxy, China is using Nepal as a proxy. अरे पाकिस्तान खुद का इंटरेस्ट देखेगा, नेपाल खुद का इंटरेस्ट देखेगा। Yes, everybody understands that China is going to use them and throw them away, but then everybody has a strategic partnership today. All these issues we are going to discuss in world political issues. Then you are going to look at changing world order, कि भाई कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे लिबरलिज्म से न्यू लिबरलिज्म वापस आया है, what has happened. Okay, lastly and most importantly, the topic of India and the world. Now we need to understand that some of the topics are repetitive in paper 2. Some of the topics such as globalization, ये repetitive topic है। आपको ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली क्या है ये समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि वन ऑफ द मोस्ट ग्लोबलाइज्ड इवेंट्स क्या है। नाउ कोविड होने के पहले वन ऑफ द मोस्ट ग्लोबलाइज्ड इवेंट वाज 9/11, सितंबर 11, जो ट्विन टावर्स का जो अटैक था बाय अल-कायदा, it changed the entire global order. America came out and said that either you are with us or against us. Suddenly there was a polarization and there was a strong stance and state action taken against terrorism. वरना तब तक इंडिया सबको बोलते रहता था, इंडिया used to run from pillar to post everywhere, सार्क में जाके अरे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। उसके बाद when पाकिस्तान का links were found, ISI के links were found, then US said. Until then US had a very pessimistic view of India.
though it tried a lot to gain from India, but India was never seen as a strategic partner. हमारा नेचुरल मित्र पहले से ही आजादी के टाइम से रशिया था. तो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ये सब इतना कॉम्प्रिहेंसिव और रिपीटेटिव है, जो जीएस में भी दिखेगा, पेपर 2 में भी बहुत सारी जगह दिखेगा. जब हम पेपर 1 में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कर रहे होंगे, और जब हम व्हेन वी टॉक ऑफ फ्रीडमन, फेडरिक वॉन हायेक, इनकी थियरीज की बात करेंगे, जेएम कीन्स की बात करेंगे, मिल्टन की बात करेंगे, एडम स्मिथ की बात, तो you will see that there is a lot of repetition that is going to happen, because majority of these issues have happened in the similar context. Same history हुआ, same events हुआ, उन events का different fallout हुआ. जैसे 9/11 was one of the most globalized, now one of the most globalized thing in the era of reverse globalization. देखा आपने, लोगों का आना जाना बंद, फ्लाइट्स का आना जाना बंद, एक दूसरे के घर में जाना बंद, अक्रॉस बॉर्डर तो छोड़ दो. कोविड के सिनारियो में क्या हो गया है? लोकलाइजेशन, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन. एवरीबडी इज गोइंग बैक टू प्रोटेक्शनिज्म. कोई डब्ल्यूटीओ को मान नहीं रहा है, सब लोगों ने टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं. एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू फाइट इट आउट ऑन इट्स ओन. तो ये ग्लोबलाइजेशन का जो कंटेक्स्ट, सो मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स इन पेपर 2 आर रिपीटेटिव. Hence a very comprehensive मतलब सगळे आयाम तुम्हाला consider करावं लागणार in this. Okay, so this is the broad discussion regarding syllabus. I have covered what I intended to cover in this session. Sir, I think I have ended my session, but for a question and answer, it's open. If students want to ask certain questions, they may.